Okay, so in the yesterday's class, we were talking about these things, right? You can see over here, we were talking about these things in the yesterday's class. This is our topic. We just talk about reactivity speed. We just talk about everything over here, like metals and their loss of electrons, their density, their metallic bonding, each and everything, right? So let's initiate with different thing today. So we are moving towards something different today, right? Let's talk about displacement reaction today. Today, we are moving towards displacement reaction. Yes, displacement reaction is a type of reaction in which a highly reactive can displace less reactive, right? It is a type of reaction in which highly reactive metal can displace less reactive metal from its salt, right? From its salt, right? You need to remember this, from its salt. For example, what I'm trying to say, I am saying you that if you have a salt of copper sulfate and you are going to add zinc over here, right? So it is telling you that zinc is more reactive than copper, right? It is telling you zinc is more reactive than copper. So zinc can displace copper from the salt, right? So it will form what? Zinc sulfate and copper will be eliminated, right? I have told you guys yesterday that the highly reactive has an ability to ionize, So you can see that this is the highly reactive. Right now it is in phase state, but now after the reaction it become ionized. It lost its electrons, right? You can see over here right now it is neutral and now it becomes charged, right? It just lost two of their electrons, right? And you can see that when you have copper, it is ionized right now, but when you add zinc over here, it just get electrons back, right? In the presence of zinc and copper, if you have these two together, we know that one is more reactive and one is less reactive. So definitely only one can be ionized. Only one can being ionized between these two. So right now you can see over here zinc get ionized and it just give electrons of copper back to him, right? You can see over here it is just like this that you need to understand. When we just have few things to do, just like अब हमारे पास एक ही काम हो सकता है दोनों में से, फॉर एग्जांपल दोनों में से कोई एक ही आयोनाइज हो सकता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आपके पास सबसे पहले वो आयोनाइज होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है? So you can say that this is the process. This is what displacement reaction. You can see that zinc ने कॉपर की जगह ले ली, ठीक है? जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटाकर उसकी जगह ले ली, ठीक है? अब देखो इसको हम एक और लफ्जों में कह सकते हैं what it is a loss of electron, and loss of electron is what? It is also oxidation, and a gain of electron is also reduction. We will do it later on in redox reaction, but you can see over here as well. ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है ना, तो इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें या आप इसको गेन ऑफ ऑक्सीजन कहें. इट इज आल्सो व्हाट? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो व्हाट? ऑक्सीडेशन. इट इज आल्सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन. यू कैन सी ओवर हियर, बट दिस इज नॉट right now our topic. Our topic is what? Displacement reaction. So I'm just going to tell you that when you have two different metals, one is ionized and one is a simple metal. अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास जिंक होता, आप इसको कॉपर में डाल देना तो कुछ नहीं होता, ठीक है? क्योंकि कॉपर आपके पास क्या है, ये तो खुद मेटल है, तो ये मिक्सचर हो जाता है, कॉपर का और जिंक का मिक्सचर हो जाता है, ठीक है? बट अब आपने क्या किया है, इसको सॉल्यूशन में डाला है. आपने किस में डाला है? सॉल्यूशन में. इट इज एक्वस and it is solid. In this state they can displace copper. ये आपने याद रखना है, ठीक है? कॉपर में अगर डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा. that is just a mixture of two metals, different metals, right? लेकिन एक का सॉल्ट होना जरूरी है, ठीक है? और अगर लेस रिएक्टिव का सॉल्ट होगा तो वो आराम से क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है? Now just have an example of one more salt. For example, आपने क्या किया, आपके पास था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास था
लाइक कोई भी सॉल्ट अगर हम लें, मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट था आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, इसके अंदर आपने पोटेशियम डाल दिया, आपने इसके अंदर जिंक डाल दिया, ठीक है। हमने 2 दफा डिफरेंट मेटल्स डाले। You can see over here we have 2 different reagents over here. One is what? One is potassium with the magnesium sulfate, and second one is zinc with magnesium sulfate, right? So if you know, or if you learn the reactivity series, so you will get to know this, that potassium is more reactive than magnesium. It is more reactive and is less reactive, right? So that means potassium can displace magnesium, but we know that potassium belongs to group number 1, so it has a +1 charge, right? And sulfate is having -2 charge. Sulfate is having -2 charge. So that is why this 2 will go over here and this 1 will go over here. So what is the formula between these two? The formula will be K2SO4. So over here the product which is formed is K2SO4, and it will eliminate magnesium, right? ठीक है बच्चों? और बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ 2 लगा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को कंप्लीट लिखते हैं, सो आफ्टर मैग्नीशियम वी हैव एल्युमिनियम, देन वी हैव जिंक, and then we have iron and lead. Now you can see over here, now magnesium is more and zinc is less, right? Now it is more and it is less, so that means zinc is not able to displace magnesium from its salt. There is no reaction. Zinc is not able to, you can say that, even you want to say, you can say that zinc is not able to reduce magnesium. It is actually reduction. Now we know that zinc is going to just like, you can see that there is a reduction now. So zinc is going to reduce copper, right? So you can say that zinc is not able to reduce magnesium, right? Or you can say that there is no reaction because zinc is less reactive than magnesium. अब ये डिपेंड करता है कि आपसे पूछा किस सेंस में जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टिविटी के सवाल है पेपर में, तो आपसे रिएक्टिविटी की सेंस में पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे कि सर या जवाब देंगे एग्जामिनर को, से दैट जिंक इज लेस रिएक्टिव सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस दैट्स ऑल, राइट। लेकिन अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में, तो हम उसमें बता सकते हैं जिंक इज नॉट एबल टू रिड्यूस मैग्नीशियम, राइट। तो ये आप लिख सकते हैं। चले अब जल्दी से हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जो कि आपका होमवर्क है, उसको हमें करना है। जल्दी से आप लोग बना लें रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। जल्दी से हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद है हमारे पास जिंक, देन वी हैव आयरन, देन वी हैव lead, copper, silver, gold, right? We have these metals, right? Then you can see that I'm just writing the formula of any salt, no problem, whatever the salt is. I'm just writing KCl, I'm just writing NaCl, I'm just writing calcium chloride, I'm just writing magnesium chloride, then aluminum chloride, and then so on. It will be like zinc chloride, then it will be iron chloride, right? Then it will be lead chloride, then it will be like copper chloride, silver chloride, and iron chloride, right? You need to draw this table in your copies. It is your homework, right? You can see over here what I am trying to say. You can see over here, bacho, what I'm trying to say. For example, if you are going to pass potassium from the KCl, right? For example, if you are adding potassium into the salt of KCl, there is no reaction. Why? Because the metal that we are going to add in the salt solution is already over there, right? तो कोई फायदा ही नहीं होगा डालने का, है ना। जब वहां ऑलरेडी पोटेशियम मौजूद है, उसका सॉल्ट बना हुआ है, तो उसको डालने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं no reaction, right? But remember, आपके पास, आपको पता है potassium is the more reactive, or you can say that
it is the most reactive, right? It is the most reactive and this is the least reactive, right? So इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि potassium can displace all of them from their salts. Potassium can displace all of them from their salts, right बच्चों? तो अब देखो, अब आपके पास कोई सा भी सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों ना हो, आपके पास NaCl है, NaCl में अगर आप K को डालोगे तो K क्या करेगा? Na को डिस्प्लेस करके KCl बना देगा और Na को अलग कर देगा। अगर आपके पास MgCl2 है, आप उसके अंदर K डाल देते हो बच्चों, तो K जो है Cl को डिस्प्लेस कर, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और उसको अलग कर देगा, बोलेगा चलो भाई बाहर, ठीक है, निकाल के बाहर रख देगा, ठीक है ना। इसी तरह आप अगर आयरन के अंदर पोटेशियम को डाल दोगे तो वो भी क्या करेगा? वो निकाल के आयरन को बाहर रख देगा, इस तरह, right? But you need to remember the salt formula of KCl will remain same. Why? Because we know that potassium from group number 1, so the charge of potassium is +1, ठीक है, and chlorine is from group number 7, so the charge of chlorine is -1. So when they combine together, they will form KCl. तो ये जो फॉर्मूला है ये सॉल्ट का हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर पोटेशियम को डालने लगे हैं बच्चों, सो हमेशा पोटेशियम हर मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर कर अपना सॉल्ट बना लेगा और उनको निकाल कर बाहर रख देगा, ठीक है बच्चों, ऐसे ही होगा, है ना? ठीक है हमजा? Yes, Hamza, Fizar, is that right? Yes, Any sir. issue? Okay, that's good. Sir. Now, अब आप देख सकते हैं कि आप सोडियम को अगर डालेंगे KCl में, now you can see over here, if you are adding sodium into KCl, we know that K is more reactive and it is less reactive. So there is no reaction, right? Less reactive, more वाले को replace नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर आप सोडियम को अगर सोडियम क्लोराइड में ही डालने लगे तो देयर इज आल्सो नो रिएक्शन बिकॉज बोथ आर सेम, राइट। नाउ उसके बाद वाले की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड में अगर आप डाल दें क्या? सोडियम, तो डेफिनेटली ये क्या बनाएगा? आपके पास सोडियम क्लोराइड बनाएगा बिकॉज सोडियम कैन डिस्प्लेस पोटेशियम बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव, ठीक है बच्चों। तो अगर आप यहाँ देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा एंड बाकी सब में NaCl बनता रहेगा और दूसरा वाला जो मेटल है वो निकलता रहेगा, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। यस सर। अब देखो बस इसी तरह आपको करते रहना है, ये इस तरह बढ़ता रहेगा क्योंकि ये जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा तो यहाँ पर रिएक्शंस नहीं होंगे और आगे रिएक्शंस होते रहेंगे। तो आपने ये टेबल घर पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, हम इसको नहीं करा रहे हैं, ये आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रॉपर्ली समझ में आ जाए और जितने भी आपके पास रिएक्शन हो, आपके पास जितने भी इस तरह के सवाल आए रिएक्टिव डिस्प्लेस से तो वो आप कर सकें, ठीक है भाई बच्चों। It will be like this. तो ये आप कर लीजिएगा, इट इज योर होमवर्क, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे बाद में आफ्टर द क्लास, ठीक है। पिक्चर ले लो जल्दी से। Sir, can you scroll up a little? लीजिए, ठीक है, या और ऊपर करना है? टिक लेनी है तो आप ये भी पिक्चर ले सकते हैं। डन? Done. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमने बात कर ली है बच्चों, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर कोई एलिमेंट आपके पास कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट देम बाय इलेक्ट्रोलिसिस, राइट बच्चों। और मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम हमारे सिलेबस में है, राइट। और अगर कोई कार्बन से लेस रिएक्टिव है तो वी कैन एक्सट्रैक्ट देम बाय रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन थ्रू कार्बन, एंड कार्बन के थ्रू रिडक्शन करने के हमारे पास आयरन हमारे सिलेबस में है. सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लास्ट फर्नेस फर्स्ट. लेट्स टॉक अबाउट आयरन वाला फर्स्ट. ठीक है, चलो इसकी हेडिंग हम डालेंगे, इट इज अ ब्लास्ट फर्नेस. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, राइट बच्चों. ये हमें करना है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आयरन, वी आर गोइंग टू फॉर्म आयरन, राइट बच्चों. यहाँ पर हम कर रहे हैं आयरन की एक्सट्रैक्शन. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमें करना क्या है. हम जब जमीन को जब फॉर एग्जांपल हम जमीन को जब खोदते हैं, उसके अंदर से मेटल्स निकलते हैं, तो वो निकलते हैं ओर की फॉर्म में, यानी कि सॉल्ट की फॉर्म में. तो अगर आप आयरन की ओर की बात करोगे बच्चों, so the name of iron ore is hematite. The name of iron ore is hematite, and we just receive Fe2O3 over there. हम क्या रिसीव करते हैं बच्चों, हम रिसीव करते हैं Fe2O3 over there. हमारे पास इस फॉर्म में होता है आयरन. ठीक है, हमारे पास आयरन इस फॉर्म में होता है. हमें इसमें से आयरन को निकालना है. You just need to take out the iron from this salt. ठीक है, हमें इस सॉल्ट में से आयरन को निकालना है. और हमें पता है, हमने अभी पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज, द मोस्ट रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव फ्रॉम द सॉल्ट. तो हम अगर देखें रिएक्टिविटी सीरीज को, अगर हम देख लेते हैं, साइड में बना लेते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी केमिस्ट्री में. सो आई एम जस्ट ड्राइंग इट ओवर हियर. यहाँ कार्बन लिख दिया मैंने, ये जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट. सो यू कैन सी ओवर हियर कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है. सो वी कैन यूज कार्बन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ठीक है, अब इस प्रोसेस का नाम है ब्लास्ट फर्नेस, राइट. सो ब्लास्ट फर्नेस में हम करते क्या है, इट इज जस्ट लाइक दिस. ये आपके पास जो अपैरेटस होता है ना, ये इस तरह का होता है. इट इज जस्ट लाइक दिस. यहाँ पर आपके पास सेपरेशन होती है, यहाँ पर आपके पास सेपरेशन होती है, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन यूज करते हैं. यहाँ से ऑक्सीजन इन होती है, यहाँ से ऑक्सीजन आउट होती है, यहाँ से हम रॉ मटेरियल ऐड करते हैं. ठीक है बच्चों. सो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कंबस्शन की. देखो, मैं जो हेडिंग के साथ लिख रहा हूँ ना इक्वेशन, आपने इसी हेडिंग के साथ लिखनी है अपने कॉपीज में, क्योंकि ये हेडिंग अगर आप लिख लेंगे तो आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन आ जाएगी रिएक्शंस की, जो कि एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. इट इज कंबस्शन ऑफ फ्यूल दैट वी आर यूजिंग इन आवर प्रोसेस. हम कौन सा फ्यूल यूज करेंगे इसमें बच्चों, वी आर गोइंग टू यूज कार्बन in the process. We just going to add carbon and we are going to burn it in the presence of oxygen, and we are producing carbon dioxide, right. This is the first reaction. हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम जो है कार्बन फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम कार्बन को कंबस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है. उस एनर्जी की वजह से प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट. बट द थिंग इज, हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि आयरन को ऑक्सीजन आयरन से छीन ले. हमें वो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ये फुली ऑक्युपाइड है, तो ये काम नहीं कर सकता है. तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए ताकि वो थोड़ा सा रिएक्टिव हो. ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर जस्ट एडिंग व्हाट, मोर कार्बन ओवर हियर. व्हेन वी ऐड मोर कार्बन ओवर हियर, so that is why the oxygen will be limited and it forms what, carbon monoxide. This process is known as formation of reducing agent. This is known as formation of a reducing agent. You can say it. It is a formation of reducing agent. अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, write down the equation of the reducing agent formation in blast furnace. So this is that equation, right? This is gas, this is solid, and this is gas. This is solid, this is gas, and this is also gas. Now, the main process over here is reduction, right? The main process over here is reduction of hematite ore, right? मैं ये सारी बातें यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके पास किसी तरह का भी कोई एमसीक्यूज आए तो आप बासानी उसको कर सकें. ठीक है, इस सारे एमसीक्यूज के पार्ट्स में आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ. Now you can see over here we have a hematite ore.
right? We are just passing carbon monoxide from it. You can see over here, carbon is more reactive. I have already told you it is more reactive and it is less reactive. So more reactive can displace less reactive from its salt. We know that, right? So in this way, this oxygen will be catched by carbon and it form what? Carbon dioxide. For the balancing, I'm just writing 3 over here. Now the carbon is balanced, oxygen is 3 to the 6, and it is 6, and iron is balanced. This is balanced equation. It is solid, it is a gas, it is a liquid iron, and it is a gaseous state. You can see over here, this is reduction. Reduction is what? Reduction is actually loss of oxygen. So you can see that iron loss oxygen, iron loss oxygen, right? Loss of oxygen is what? Loss of oxygen is called reduction. So right now, iron oxide reduced to iron. Iron oxide reduced to iron. Iron 2 oxide. Why I'm writing 2 over here? Because iron is plus 2 over here. If you see over here, it is Fe2O3. So you send 3 over here and 2 over there. So it will become what? It will become, sorry, it is iron plus 3 right now. That's good. So we can write iron 3 oxide reduced to iron, right? Iron 3 oxide reduced to iron, right? So the process over here is reduction, and in this way, iron 3 oxide reduced to iron because it lose oxygen over here, right? Then one more important reaction over here is thermal decomposition of limestone. Thermal decomposition of limestone. It is again a very important step. Why we are doing it, I am going to tell you later on. You can see over there, what is limestone? Limestone is calcium carbonate. When we heat it, it will break down into calcium oxide and carbon dioxide, right? Now, why we are using this process? We know that. बच्चों जब हम जमीन से आयरन ऑक्साइड को निकालेंगे, when we just take out hematite ore from the land, so we know that वहां पर SiO2 भी होगी. SiO2 is the sand, right? Sand जो होती है एसिडिक इम्प्योरिटी होती है. सैंड क्या होती है आपके पास? एसिडिक इम्प्योरिटी होती है. तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने ये प्रोसेस किया है. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी? You can see over here, it is a basic oxide. It is what? It is a basic oxide, and when it reacts with acidic oxide, यानी कि sand के साथ मिलेगा जब ये, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. न्यूट्रलाइज होगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लैग. हम क्या बोलते हैं? स्लैग. तो हमारे पास यहाँ 2 प्रोडक्ट्स हैं. एक तो मोल्टन आयरन हमारे पास बन गया बच्चों, और एक हमारे पास स्लैग बन गया है. सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी. ये मैंने डायग्राम बहुत छोटी बनाई है. यहाँ पर आपके पास मोल्टन आयरन होगा. सो वी कैन टेक मोल्टन आयरन आउट फ्रॉम हियर. इट इज मोल्टन आयरन. और मोल्टन आयरन के ऊपर आपके पास क्या होगा बच्चों? स्लैग फॉर्मेशन होगी. यहाँ पर ना स्लैग उसके ऊपर घूम रहा होगा. तो यू कैन टेक आउट स्लैग फ्रॉम हियर. इट इज अ इम्प्योरिटी, right? So you can see over here, from here what we are adding, we just are adding coal, we are just adding oxygen as a raw material, we are adding hematite ore as a raw material, and we are adding calcium carbonate. So you can see over here, I have already told you over here that we are passing oxygen gas from here. So definitely other than all raw materials are going to add from the top. So core, you can say that coke, it is a form of carbon, right? A hematite ore, which is Fe2O3, and limestone, which is calcium carbonate, are adding from the top, right? And molten iron and slag is removing from the bottom, right? You need to understand all of these. This is a very important topic. So how many raw materials that we are adding? 4 raw materials. 3 plus 1. 3 plus 1. We are adding 4 raw materials. Raw materials means reactants that we are providing. You can see over here, carbon dioxide is formed over here. Carbon monoxide is one more reactant over here, but they are formed and finished during the process. We are not going to add that, right? It is forming and then using inside the process. We are not adding it. When we are not adding it, definitely it is not a reactant, right? It is not a raw material that we are adding, right? ये हम ऐड नहीं कर रहे तो हम इसको रॉ मटेरियल नहीं बोलेंगे.
ठीक है बच्चों? ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. okay, take the picture of this. It is very important, very important. Just take the picture of this, and if you want to ask any questions, so you can. Yes, Asna, Hamza, Fazar, and Ilhan. If you want to ask anything, so you are free to ask anything. I don't have any question. That's great. So this is a very important topic. I just ask every one of you to learn all the information that I gave you over here. You need to learn it as early as possible, because a lot of questions in the exam in paper 1 and in paper 2 are from this topic. This is very important, very important, right? Then let's talk about iron. No, what is iron? Iron is Fe, right? It is iron. We know that iron can rust, right? Rust is what? Oxidation, right? It is what? Oxidation. And you need to remember this, that iron always rust in the presence of water. Okay, rusting is what? If you talk about rusting, so it is the reaction. It is the reaction with oxygen. It is the reaction with oxygen in the presence of water. In the presence of water. You need to remember this, बच्चों. पानी के बगैर रस्टिंग नहीं हो सकती है. पानी के बगैर रस्टिंग नहीं हो सकती है. If you want to check this, so you need to remember this. In dry weather में रस्टिंग नहीं होती, बहुत ना होने के बराबर होती है. But when there is rain, there is a moisture in the atmosphere. When there is rusting a lot as compared to dry weathers. और आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कराची में रहते हैं, so जो लोग साहिल समंदर के पास रहते हैं, so there are a lot of rusting process over there near the coastal areas, but less rusting in the central areas. तो जहां पानी की क्वांटिटी होगी वहां रस्टिंग होगी. अगर क्वांटिटी नहीं होगी तो रस्टिंग नहीं होगी. ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है डेफिनेटली, बट पानी के बगैर रस्टिंग नहीं हो सकती है. ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, बट पानी भी बहुत जरूरी है. पानी होना वहां जरूरी है. तो अगर आपके पास आयरन है, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, इट इज गोइंग टू बी रस्ट. ये रस्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये आपके पास रस्टिंग है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. और आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ 2 लगाएं, 3 to the 6, ये आ गया 3, और ये हो गया आपके पास बैलेंस इक्वेशन. ये रस्टिंग की आपके पास इक्वेशन है, बट आपको याद रखना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. विदाउट वाटर this is not going to be rust. One more metal is going to be rust in the atmosphere. If you talk about aluminum, so aluminum is also going to be rust because it is very reactive. It is highly reactive, right? So यहाँ पर भी rusting हो सकती है. I have already told you that aluminum is in the reactivity series of the fifth element in the reactivity series, so it is highly reactive, right? So it is again going to react with oxygen in the presence of what? In the presence of water, right? Rusting होती है आपके पास बिल्कुल. And then why I'm just writing it over here. Rusting तो यहाँ हो रही है. Al2O3 आपके पास बन रहा है. Same reaction हो रहा है आपके पास. You can write 2 over here, 3 over here, 4 over here. Same reaction बिल्कुल same है. But why I'm writing over here? यहाँ पर ये हमारे लिए ये हमारे लिए डिफिकल्टी है, ये हमारे लिए नुकसान है. This is disadvantage, right? This is disadvantage. ये problematic है. It is just going to break down metal. It is a breakdown of metal. It is a breakdown of metal. It is a loss of metal. You can say that is loss of metal in the form of rusting. But right now over here, it is not a loss. It is a strength of this metal. Right now, it is the advantage for us. It is the strength of aluminum metal. When there is a rusting of aluminum, okay, it just get more strength.
जब कभी भी आपके पास एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम जो है ना इनर्ट होता है ज्यादातर। इनर्ट क्यों होता है, उसकी वजह यही होती है बिकॉज एल्युमिनियम हैज अ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑनटू इट, राइट। वो इनर्ट हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं करता बिकॉज एल्युमिनियम ऑक्साइड इज आल्सो सेम इन कलर, इट इज ग्रे इन कलर एंड इट इज आल्सो ग्रे इन कलर। तो जब रस्टिंग होती है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि एल्युमिनियम की रस्टिंग हो गई है, बट एल्युमिनियम हैज अ लेयर ऑफ इट्स oxide on it, right, which will provide it strength, it make it more strengthen। ये आप देखेंगे कि ये और strengthen हो जाएगा, and that is why it is inert in nature, that is why inert in nature aluminum आपके पास inert होता है। That is a very important point of aluminum if you talk about aluminum, so this is the very important point of aluminum, you need to remember this for aluminum। इस वजह से एल्युमिनियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, इस वजह से एल्युमिनियम को हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं बिकॉज इट हैज अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑनटू इट, राइट बच्चों। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट रस्टिंग कभी कभार काम भी आ सकती है और कभी कभार नुकसान भी हमें पहुंचा सकती है। सो जब आयरन की रस्टिंग होगी तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस, इट इज लॉस ऑफ मेटल राइट नाउ, बट अगर वही रस्टिंग एल्युमिनियम पे हो जाए इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो एल्युमिनियम को बहुत सारी जगह पर हम यूज कर सकते हैं इसकी वजह से। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर द रस्टिंग, व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर रस्टिंग? डेफिनेटली जब आयरन के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, आयरन जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है रस्टिंग के बाद, तो हमें उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करना है, उसे हमें कहीं ना कहीं बचाना है। So the very basic purpose of painting is to avoid corrosion, or you can say that it is rusting and corrosion, both are the same thing। Precautions of corrosion, corrosion का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो ब्रेक डाउन हो जाता है ना मेटल ड्यू टू द रस्टिंग, इट इज नोन एज corrosion, ठीक है। corrosion आपके पास क्या है, इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ मेटल, लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू द रस्टिंग, राइट। तो उसकी प्रिकॉशन सबसे पहली क्या है, हम पेंट करते हैं। We all know that हम अपने घरों के अंदर पेंटिंग करते हैं, ग्रिल्स के ऊपर, दरवाजों के ऊपर जो लोहे के बने हुए होते हैं हम उनको पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग से हम उसको बचा लेते हैं बिकॉज वी आर जस्ट कोटिंग इट विद द पेंट। जब हम उसको पेंट से ही कोट कर देंगे तो कुछ जाहिर सी बात है इंफेक्शन ही नहीं होगा मेटल का ऑक्सीजन के साथ, तो देयर इज नो रस्टिंग। Then in the rainy days, you all know that we are just going to grease many things with the grease. Grease is one of the you can say that it is organic material, आप उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो मेटल्स के ऊपर, तो उनका जो इंट्रैक्शन है पानी से वो बच जाता है। वी नो दैट ऑयल्स आर नॉट मिक्सेबल विद वाटर, जब आप ऑयल्स लगा दोगे मेटल के ऊपर तो पानी का इंट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, right? Or we all know that we just use plastics as well for the covering। प्लास्टिक कवरिंग भी हम यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों पे प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं, इस वजह से हम उसको रस्टिंग से बचा लेते हैं। वी ऑल नो दैट हम इंजन्स के अंदर ऑयलिंग करते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग से हम उसको बचा सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू जस्ट अवॉइड प्रिकॉशन इज galvanization। Galvanization is always done by zinc। Galvanization of iron, galvanization is always done by zinc, right? We just spray zinc on the surface of iron just to protect inner iron from the precaution, or you can say that from corrosion। It is one of the best precaution, it is the best thing to avoid corrosion onto the surface of iron। जो गाड़ियां बनती हैं हमारी, कार्स वगैरह होती हैं, उसकी जो स्टील बॉडी होती है या उसकी जो आयरन बॉडी होती है, उसके ऊपर पहले आपके पास जिंक स्प्रे किया जाता है ताकि प्रिकॉशंस उसको पहले ही लगा दी जाए ताकि रस्टिंग से हम बच जाए, ठीक है। Then one of the best is sacrificial protection। Sacrificial protection, it is what? It is the reactivity series। I have told you the more reactive will protect the less reactives, right? So you can say that, for example, if you talk about inner iron pipes, the inner iron pipes, this is iron pipe that is inside the land, right? It is inner iron pipe, so we just place small blocks near the pipe, we just place small blocks of magnesium or zinc, whatever you want to add, you can place these small blocks। हम क्यों ब्लॉक ये small blocks इसके आगे लगाते हैं? Because we know that magnesium and zinc are more reactive, so we can place these blocks। तो जो ऑक्सीडेशन होगी या जो रस्टिंग होगी वो इन पे होगी, आयरन पे नहीं होगी, because iron is less reactive, so it can save by the addition of
these metals. So you can say that magnesium and zinc are going to sacrifice themselves just to protect iron. So sacrificial protection is what? We are just going to place a highly reactive metal blocks near the less reactive metal pipe. So the highly reactive metals sacrifice themselves just to protect less reactive. So these are the very important precautions of corrosion. So you can just take the picture of this as well. It is also very important. Just take a picture of this. You need to learn each and every information that I gave you over here. All the informations are quite important for paper 1 and paper 2. Have you taken the pictures, Bacho? Yes. Yes, sir. Okay. So it is all about today's class. We just talk about displacement reaction. We just talk about blast furnace, and then we talk about rusting and precautions of rusting, right? And it is also what? It is also actually corrosion. Corrosion is also what? It is due to the rusting. It is actually breakdown of a metal, or you can say that it is a loss of metal by rusting. Okay. And when we want to save our metals from corrosion, so we need to apply a few precautions. And in these precautions, we have what? We have like painting, greasing, oiling, sacrificial protection, and galvanization. It is the main process. And you need to remember, galvanization is always done by zinc. Okay, Bacho, everything clear? Any problem that you want to ask? No. Yes, Hamza, everything clear? Fizar, Alhan? Yes, sir. Clear Everything is clear. Okay, so every one of you, we have recording as well of this lecture. So definitely I will share with all of you the recording of the lecture as well. So you can make notes also about this. So I will just share the recordings after the third class of the week. Okay, bacho, just take yourself, stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.